ಧೀರ ನಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ವೀರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ವಿಜಯದ 25 ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುದ್ಧ ವೀರರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಭವ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಸಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 5 ಧೀರ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಸ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾರತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಲಾರ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ವೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ ಮೇಖಲಮಠ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಶಿವಬಸವ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊಲೋಜು ಶಾರದಾರವರಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಬೃಂದಾವನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ಜಿ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪಿವಿ ಸಹದೇವನ್ ವಿಆರ್ಸಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಎಸ್ಎಂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ದೀಪಕ್ ರಾಂಪಾಲ್ ವಿಆರ್ಸಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಅಮೂಲ್ ಆಸ್ಥಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. Namaskar, myself Dr. Shruti Sharma, CEO Vrindavan Group of Institution. It's an honor for me to remember the Kargil war. 25 years back, we have sacrificed our brothers, fathers, and many ladies has lost their husbands. They have given their lives to save our nation. And I'm really happy today. I have a great woman in my institution, and they are really role model for me and for my girls cadet in NCC and students. They are having a big heart who has sent their husbands for the war, their fathers and their sons. And they are so proud themselves. Their relatives or their husbands has sacrificed their life for the nation, and what respect they have in nation now, nobody can have. बहुत गर्व से बोलना चाहूँगी, आज हमारे पास वीर नारियाँ हैं जिन्होंने अपने पतियों को खोया है और वो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे. वो घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे कि सब अच्छा हो अच्छा हो. जब इनको न्यूज़ आती है कि अब इनके जो हस्बैंड्स है वो शहीद हो गया है, वो दुख इनको पता है. उसके बावजूद भी आज ये इतने स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आए हैं. एंड अभी लास्ट ईयर वो कारगिल भी गए थे. वो कारगिल गए थे, वो बता रहे थे जहाँ पर वो लड़ाई हुई थी वो वहाँ पर देख के आए. वहाँ पर इनके रोंगटे भी खड़े हो गए थे. हम भी जब ये चीज़ें सुनते हैं हम खुद हिल जाते हैं. तो इनके जैसा मैं चाहती हूँ कि आज इस देश में हर एक लड़की ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करे कि कोई भी मुसीबत आ गया है उसको हम टाल सकें. वो बहुत ज़रूरी है. इन लोगों ने जितनी हिम्मत से 25 साल पहले उनका उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं था, वो भी छोटे ही थे. उनको एक औरत के लिए उसके पति से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं होता है. जब वो चीज़ इस दुनिया में नहीं रहे उसके बाद हर चीज़ को संभालना, सहना, बच्चों को बड़ा करना, वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है. बट हमारी वीर नारियाँ, हिंदुस्तान में बहुत सारी वीर नारियाँ हैं जिन्होंने बहुत ही हिम्मत रख के अपने काम को देखा है. और हमारे सामने 5 आज यहाँ पर है जो आज यहाँ पर आई है, जिसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ. Namaskar everybody. I'm truly proud to be here this morning, and I had the privilege and honor to operate during the Kargil War in 1999. I was a group captain then, and for whatever and my squadron did, the Air Force and the nation was kind enough to award me a Vayu Medal Gallantry. That's the only gallantry award I have. But that was one of the most difficult wars India has fought. Whilst we taught Pakistan a thorough lesson during 65 and 71, we split the nation into two, but they will never understand what a sound beating is. So they repeatedly keep coming to us and we keep thrashing the hell out of them. And that's what we did in Kargil. Pay tributes to the Veer Naris. The husband have laid down their life for the country, and it's very kind and thoughtful of you, the college and the organizers, to recognize their contribution. Remember, we have freedom, we have fun, but some people have endured a lot of hardship. They faced danger and they passed out of sight.
I'm grateful that you're honoring them, you're remembering them. Thank you very much. ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ವೀರ್ ನಾರಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು वृंदावन इंस्टीट्यूट. जय हिंद और वृंदावन इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया इस दिवस पर. आपने हमें बोला कुछ कारगिल वॉर हीरो नहीं, कोई हीरो नहीं है. जो इस देश को उस समय ज़रूरत थी वो हमने अपना कर्तव्य केवल पूरा किया. और दूसरी बात, ये मैं एक पैदल सैनिक हूँ. जो भी पहाड़ियों पे चढ़ना ये वो हमने 80 दिन की काफ़ी कठिन परिस्थिति में लड़ाई लड़ी, जीत हासिल करी. हमारे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो वहाँ पर वीर गति जिन्हें प्राप्त हुई, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. 1/13 गोरखा बटालियन, 1/11, 1/11 गोरखा राइफल्स. सो काफ़ी लड़ाई वहाँ पर लड़ी. First of all, it's a great pleasure for me to be with such august gathering of the media. My regards to Dr. Shetty, who is not here in person, but under his guidance, Dr. Shruti has taken the mantle along with the team to get all of us together here. I have come all the way from Punjab. I am from the Jat regiment, and it was my privilege to be serving the nation while being at Dras, Mashko Valley. A lot of my elders have said a lot of great things about nation. I would just like to share that here what I have seen is the teamwork, and that was what was our strength when we were fighting the Kargil war. The entire nation was a team, the unit was a team, and for anybody to succeed on any of the successes, in spite of heavy odds, we have had a maximum number of casualties in that war. Officers, men, we have Veer Naris who have sacrificed their most. मांग का सिंदूर उन्होंने देश के लिए दिया है.